confirm whether the class is reaching you. Good morning to all. Physical Geography course by Sachin Arora. This is class number 5, Structure of Earth's Interior. Waiting for all of you to join in. Once again, people who have joined in, good morning, namaskar and welcome. And apologies to begin with. Class thoda sa delay hua hai. The class has been delayed by 15 minutes because of some technical reasons. I'm sorry for that. The team and I were working on it so that we are able to resolve it, and glad to see all of you back. Good morning to all. Good morning. Okay. So confirmation of the audio and the video is going to me, and thank you for that. And I want to start with a question. 10,000 years ago. 10,000 years ago, man was a primitive man. आदि काल में जा रहा हूँ, आदि मानव के समय में जा रहा हूँ. Man was a primitive man, hunter and gatherer. Hunter and gatherer, those were the uncivilized ways. Imagine a situation. I want everyone to imagine a situation. Good morning to all. Good morning. Good morning. Thank you. आप सभी के good mornings मुझे मिल गए हैं. And I want to start with a question. I want to start with a question. तो जल्दी से अपने को एक situation में डालेंगे. We are going to put ourselves in a situation. I want you to transport yourself to 10,000 years ago, where you are a man, woman, all naked with a naked horse. Primitive man and woman. Yes or no? आप भी हैं, जानवर भी हैं. We human beings were also there, animals were also there, and then something happened. Something happened. The man and the horse, which were walking together, suddenly the thought came to the man, what if I jump and climb on the horse? Mentos moment. घोड़े पे चढ़ जाता हूं. And this is where man decided to domesticate animals. Yes or no? सोचिए आदमी की जर्नी, मनुष्य की जर्नी, आदमी नहीं कहना चाहिए क्योंकि आदमी स्त्री पुरुष दोनों है, तो मनुष्य की जर्नी. When we are talking about the journey of man, the evolution of man, after a biological evolution of man, the civilization started when that idea came. The idea was that I must climb this horse. That primitive man or woman decided to do that. Yes or no? And that marked the beginning of civilizations. That marked the entry of human being into a category where he is superior to all other specimens that we see all around us. Just think for a minute, if that idea had come to the horse first. अगर घोड़े कोई आइडिया पहले आया होता तो क्या होता? I don't know. Maybe this class was having horses. Yes? ये class में humans नहीं horses होते. So why am I talking about this? I am talking about this because today's class is going to talk about the structure of Earth. Now structure of Earth as we know about it, सिर्फ 100 साल पहले clarity आनी शुरू हुई है. It is just the study which happened. We got the clarity around 100 years ago. Why? Before that the science was not developed. So 100 years ago भी ये काम कैसे हुआ? Today's journey is about innovation. Today's journey is about thinking. Today's journey is about curiosity. So how many of you are curious? How many of you are curious? And I want to tell you that human journey, human life is all about curiosity. तो आप कितने curious हैं? सर curious क्या होता है? जिज्ञासु. How जिज्ञासु are you? So how to improve the quality of answer writing? Sort of saying, everyone who's listening to me, welcome. I do take some names. मुझे वो नाम याद भी नहीं रहते. And you also please do not take anything seriously कि मैंने किसी का नाम लिया. But somebody is asking about answer writing. Beta, please, if you have joined now, there was the first session. First session में I've talked about all that. So we will not break the flow of the class. We will continue with this. और इस Saturday को, this Saturday we have a special session on answer writing and doubt clearing at 6 PM. That announcement has been there. Is everyone okay? चलिए. Sir, energy level is awesome, but आज तो energy पूछ नहीं रहे. ऐसा लग रहा है पर्चा पहले आउट हो गया, आपके पास उत्तर है. Yes or no? तो आज energy नहीं पूछ रहे, आज पूछ रहे curiosity. क्या आप curious हैं? Curiosity. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ curiosity. आपको मेरी आवाज पहुंच रही है. You are able to listen to me. Yes. Why? Radio communication.
Think about a time when there was no radio communication. So there was a gentleman in Italy, his name was Marconi. And Marconi was able to communicate between the rooms of his house using radio waves. Rooms of his house. And he had this dream that he wanted that communication through air to happen across the world. People found it funny. Yes or no? People found it funny and impossible also. कुछ कहानियां ऐसी हैं, some stories say that people took him to some psychiatric treatment कि इसको ऐसा सुनाई देता है. I am not sure about those stories. Maybe those stories are wrong, but the fact is this man was curious and he had the belief that sound can travel. And it is because of that belief today you and I are communicating at that distance. क्या आप में वो curiosity है? Marconi is popularly known as the inventor of radio, first person to use radio waves to communicate. ये मार्कोनी है, मार्कोनी का सपना. ये क्या दिखाई दे रहा है? Curiosity बता रहा हूं. Are you curious? Are you adventurous? So today, how is the curiosity? Not the जोश. Curious है या नहीं? जहाज है. शिप दिखाई दे रहा है. ये शिप का साइड है. काफी ऊंचा होता है. If you want to know how much is it, so this is the size of the man. You can see the man here on this ladder. Why has he gone here? To check something, inspecting the ship side. So I want to tell you. Once I was, I think, in an island near Pacific Ocean. My ship was stationary. Maybe at anchor or maybe drifting. Yes. And I was supposed to inspect the side. I took this ladder. Ladder se main niche utra. And I went and I did my job. Then I was supposed to come back. Curiosity and adventure. I thought that I am near Pacific Ocean. Why should I not jump? एक बार कूद के देखते. Yes. I had all my safety with me. सारी safety belt and everything is there. These are challenging operations. So, सब कुछ बंधा हुआ है. मेरा मन था, curiosity थी to take a jump. Yes. Curious. Pacific Ocean, प्रशांत महासागर में एक बार तैर के देखने का मेरा मन था. कूदूं या नहीं कूदूं? Should I jump or not? Saturday's class is at 6 PM. Should I jump or not? आप होते तो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में कूदते या नहीं कूदते? मौका है, तैरना मुझे आता है. Should I jump into the sea or not? Lifetime opportunity. Ship is at anchor. सेफ है, बट है तो पैसिफिक ओशन. कूदिए नहीं कूदिए? यस. कूदेंगे नहीं कूदेंगे? आप होते तो कूदते. कूदें या नहीं कूदें? पैसिफिक ओशन. ये तो पोर्ट है. यू कैन सी दिस इज अ पोर्ट समवेयर नियर बाय. ऐसे क्रेन से भी उतारा जाता है. ये क्रेन से उतर रहा है. मैं सीढ़ी लेकर नीचे गया हूं. शुड आई जंप और नॉट? Sir, if there is safety measure, then you should try, sir. ये आज की डेट में, today 2023, nothing like this is allowed. Those were old days. Regulations, safety norms were a little less. कूदने का मौका था मेरे पास. कूदेंगे या नहीं कूदेंगे? Curiosity. जवाब देना है मुझे. आप होते तो कूदते या नहीं कूदते? जवाब आपके पे छोड़ दो. I was a kid. मुझे पता चला जूल्स वर्न साइंटिफिक फिक्शन पे लिखते हैं. एंड इनकी एक कहानी छपी. He wrote a story in 1864. Imagine 1864. And he wrote a story, Journey to the Center of Earth. There is a volcano. And 3 men will go inside a extinct volcano and they will find passages of the volcano inside the earth, and they were able to find many kingdoms hidden inside that. As a child, I was always adventurous whenever I read this man. Much ahead of his time, he was thinking of submarines, he was thinking of space projectiles, he was thinking of going inside the earth. And today, my story of Earth's interior will require such challenges. Are you curious? क्या आप केवल परीक्षाओं में मार्क्स लाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ डिग्री वाले बच्चे हैं कि मेरे पास डिग्री है
or are you really interested in understanding the wisdom and knowledge and what has brought humankind to all those places? आज उसकी बात हो रही. True or not? Yes or no? Somebody says सर बहुत मस्त मूवी है. मूवी तो बहुत बाद में बनी. बचपन में my curiosity as a child, I would give credit to books like this. Yes or no? किसी ने कहा आई कांट स्विम, ये भी बड़ी अच्छी बात है. भाई अगर आपको तैरना नहीं आता तो मत कूदना. इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, प्लीज डोंट जंप इनटू द पैसिफिक ओशन. गेट दैट? बट पीपल हु नो हाउ टू स्विम, मुझे जो ख्याल आया, द थॉट दैट केम टू मी दैट डे वाज दैट I know swimming in a swimming pool, I know swimming in a pond, and I have even jumped in a river. I know swimming in a river also, but मेरा सपना है, it is my dream to swim in the ocean. I have gone to the coast and beaches, मैंने बीच पे बहुत स्विमिंग की है, but somewhere deep in Pacific Ocean, प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, the largest ocean in the world, I jump on. Yes. कोई कह रहा है सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं करवाया. बेटा जरूरत होगी तब कराएंगे ना. यस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको. जरूरत होगी, आई विल मेक यू डू दैट. इज एवरीवन ओके? चलिए, गुड मॉर्निंग. तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूरियोसिटी. तो हाउ इज द क्यूरियोसिटी? बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे, सर आप कूदे या नहीं कूदे. थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि मैं कूदा या नहीं कूदा, बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस छोड़ता नहीं हूं. यस, somebody says you can't swim in Pacific Ocean. ये देखो, ये नए आए हैं, इन्होंने तो सुना होगा, हम तो तैरे हैं. कोई बोल रहा है you can't swim in Pacific Ocean. कहां से लाते हो ये डर? Where do you get this fear that you can't swim in Pacific Ocean? बताओ. Then how can you clear IAS? How can you clear this exam? आप एक बात बताइए, when you decided to take a leap into this, कि मैं इतने छोटा लड़का या लड़की इस परीक्षा को पास करूंगा, तो आप भी तो प्रशांत महासागर का ही चैलेंज ले रहे हैं. Aren't you taking the challenge of jumping into Pacific Ocean? डरपोक लोग ये पास नहीं करेंगे भाई. Yes or no? चलिए, सवाल ये आता है सर, इसको छोड़ते हैं. But yes, that day I chose and I did jump into the sea and I did swim. तो ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी बात. चलिए शुरू करें आज की बात. क्वेश्चन से करते हैं. मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, इज योर क्यूरियोसिटी हाई? एंड पीपल हु हैव हाई क्यूरियोसिटी, माई प्रॉमिस, ये एग्जाम आपके लिए है. दिस एग्जाम इज फॉर यू, द टॉप एग्जाम इज फॉर यू एंड यू विल क्लियर दिस. जोश चाहिए, होश चाहिए. वी नीड जोश, वी नीड होश. होश मीन्स टेंस माइंड. एंड थर्ड इज दैट quest to find something new, go beyond my limits, that adventure, that curiosity, and I am starting my class with that. दो सवालों का जवाब देना है. पहला, the structure of planet Earth below the mantle, the core is mainly made up of what? core किससे बना है? स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, जल्दी से बताएंगे core किससे बना है. कोर बना है एल्यूमिनियम से. कोर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. आंसर इज सी. पीपल हु डोंट नो इट, आज की क्लास विल टेल यू व्हाई. टुडेज क्लास विल टेल यू व्हाई. सेकेंड थिंग, टाइड्स अकर इन द ओशंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग. टाइड्स मतलब ज्वार भाटा. जो सागर का तल है, द MSL, द मीन सी लेवल ऑफ द सी, राइजेस एंड फॉल्स, दैट इज कॉल्ड टाइड. टाइडल राइज एंड फॉल, इस ऊपर नीचे जाने को ज्वार और भाटा कहते हैं. ये क्यों आता है? व्हाई डज इट कम? तो क्विकली क्वेश्चन नंबर 2. मेरा काम अपनी क्लासेस में इन सब का आंसर आपको आ जाएगा, बट आज बात हो रही क्यूरियोसिटी की. जल्दी से सिलेक्ट करेंगे कौन सा है. तो इन दिस द आंसर इज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The gravitation pull of sun, gravitational pull of moon causes the water to move up and down.
and remember the earth is rotating about its axis, so एक बल उसको बाहर की तरफ फेंकता पानी को, that is called centrifugal force. So centrifugal force is also responsible. In fact, tides are produced because of the difference between the gravitational pull and the centrifugal pull. तीनों सही हैं, तीनों यूपीएससी के पुराने सवाल, previous questions, everyone. Again I said, the tide तो आपने पढ़ाया नहीं. Why did you ask this question when you have not taught us this? I am asking about curiosity, and I want to ask the students listening to me a simple question. How many of you have never been to the sea coast? Have you been to the sea coast? समुद्र का किनारा देखा है या नहीं देखा, जाकर कभी देखा है या नहीं देखा है? Yes? No? Sea, दरिया, ocean, coast, कभी नहीं गए. Write N if you have never gone there. Write N. If you have never gone there, write N. Everyone look at the chat box. Look at the chat box. N से भर जाएगा. N से भर जाएगा. उत्तर भारत में North Indians, most of them have not gone to the sea coast. जाने की जरूरत नहीं पड़ी. और मैं बताना चाहता हूं इन बच्चों को, how will I teach them tide? कैसे पढ़ाऊं? क्यूरियोसिटी जगा रहा हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू राउज योर क्यूरियोसिटी. 70% of earth covered by water. Europe was able to colonize the world. Britain was able to become that big an empire because they knew how to navigate in the sea. Most of the population in the world lives within 100 kilometers of the sea. Only North Indian plain is a big exception. Such huge population so far away from the sea is possible only in India because of those river valleys. Next opportunity, मौका मिले दरिया जाने का, go to the coast of India. India is blessed with such an amazing coastline. Don't miss it. ठीक है? कोई कह रहा है मूवीज में देखा है क्या? तो आप उन्हें केवल फोटो में देखना चाहते हैं, सचमुच में भी देखना चाहेंगे उन्हें? ये सुनो, चलिए. ओके एवरीवन, इमेज नहीं देखना है अब हमें, रियलिटी में. सो इनविटेशन है सभी लोगों के लिए. आप सबने कहा सर मैं समुद्र में कूद जाऊंगा. अरे देखा ही नहीं, कूदना तो बहुत दूर की बात है. ये सुनो, तो इनविटेशन, लेट्स सी व्हाट्स देयर. एवरीवन रिकैप. नेबुला, चिंता नहीं करना, बहुत सारी फोटो है, घबराना नहीं है. फोटोज में बता रहा हूं क्योंकि फोटो स्टिक टू आवर माइंड. So we talked about nebula. Every day new ways of looking at what we read yesterday. अगर कल कुछ समझ आया, आज उससे बढ़ जाएगा. Every class will add to your information, your understanding, your knowledge. Only request, एक वादा आपसे चाहिए, you will not miss the classes because पिछली class से next class will add on to it. Is everyone okay? And how many people are there in the class? How many people are there in the class? Two. You and I. I am on whose side? I am on your side. मैं आपकी तरफ हूं. I am not your enemy. I am your friend. I am on your side. Question is, you are on which side? Are you on your side? If you are on your side, you will do whatever it takes. Clear this exam. If not clear this exam, to extract the best out of your teacher. If you are on your side. और मुझे पता है बहुत से लोग अभी on your side नहीं हो. सर आज तबीयत खराब है इसलिए I am not on my side. Remember, the cup is broken. To be on your side. Quickly have a look. Nebula. Nebula से क्या हुआ? घूमना शुरू हुआ. Contraction, rotation. Center में what was born? What was born in the center? Stop writing. Just look at the screen. What was born at the center? A star is born. Star is born, and some material does not go inside the star. It keeps on rotating. Those material turns into pebble turn into planetesimal, बड़ा होता जा रहा. Planetesimal became bigger and they created planets. Two category of planets. One category is called the terrestrial rocky planet, the dense ones, and the lighter gaseous planet. And Venus, Earth, Mars.
They are the terrestrial planets. Terrestrial planets, Earth and Venus, can you see they're almost the same size? So they are called the twins. Venus is called the twin of Earth. I was also talking about stars yesterday. Venus is the brightest star in the sky. Sometimes you will see it early in the morning before sunrise. We call it the morning star. Sometimes you will see it in the evening after sunset. We call it the evening star. So sun के बाद अगर कोई star, any other star which appears brightest, so it is not actually a star, it is going to be Venus. अब many of you haven't looked at the sky. Curiosity, ऐसा नो, वरना Venus आपको morning evening अभी पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है. तो Venus naked eye से दिखता है, and people who do not know, सर ये हम देख सकते हैं क्या? Can we look at the planets? Can we find them? You can find planets. Let me tell you. Mercury थोड़ा सा परेशान करेगा. Mars, Venus, Jupiter, Saturn. All these four, Mars, Venus, Jupiter, Saturn, they are visible by naked eye. If you know how to locate a planet, they are visible by naked eye. And I want to tell you, if you have a simple binocular, वो जो tourist use करते हैं, tourist binocular, you can even see the moons of Jupiter through that. थोड़ी curiosity. So everyone, where are we? यहाँ तक पहुंचे. And then this one, ये कौन सा episode है? This incident, can anyone guess what is this happening? Remember Earth? Another planet came and collided with Earth, and what was created? Moon was created. Yes or no? Somebody is saying, sir, क्या Venus और Mars में water है? Yes or no? क्या Venus और Mars में water है? That question has come. Everyone, did we send Mangalyaan to Mars? Have you heard of Mangalyaan? Yes. We are trying to find water. So there is some water in Mars. We will see that water was there. In fact, we also find Nadi Ghatiyan, valleys on the floor of Mars. It tells us in the past there was water. Presently, we don't have surface water, but it is believed some rock and mineral water is there in Mars. कोशिश हो रही है मंगल ग्रह पर जाने की और वहां पे पानी ढूंढने की. Regarding Venus, Venus में नहीं जा सकते. Venus impossible. Why? Venus atmosphere is very very thick. Venus का atmosphere is very very thick and it is full of greenhouse gases like carbon dioxide. So that thick atmosphere, उसके अंदर घुसना मुश्किल है, and the temperature is so high. In fact, Mercury, which is the closest planet to the sun, is not the hottest. Venus is the hottest. तो जितने भी प्रोब भेजे हमने बहुत मुश्किल से लैंड हुए and they got destroyed. Yes, it is a rocky planet. It has a surface. अभी पानी की संभावना मुश्किल. Is everyone okay? So when moon collided with sun, why don't both melted and form bigger planet? Sun and moon collide किया. अरे कब किया? मुझे तो पता ही नहीं चला. ऐसे डाउट मत पूछो यार. Sun and moon collided. Why did they not melt and make new planet? ऐसा मत करो यार. मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग नो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स. सुबह सुबह नहीं करना है. एवरीवन होश में. एंड दिस इज वे. यहां तक आ चुके हैं. एवरीवन आर यू विद मी ऑन दिस? आर वी हियर? चलिए तो पेन निकालेंगे, नोटबुक निकालेंगे. एवरीवन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. नोट्स बनाएंगे आज. एवरीवन रेडी फॉर द नोट्स? Ready for the notes? Stop asking questions. Early morning, do not consume any kind of intoxicant. अगर नशा करना है तो ज्योग्राफी का नशा करो. With me, yes or no? वो मेरा काम. I will do a lot of things with you, interesting things. Everyone ready with the notes? So everyone who's joined us knew what I do in the class, that is called jottings. That is called jottings. और आप उसे घर जाकर या क्लास के बाद आप उसे पूरा भी करते हैं. ठीक है? Yes or no? कोई पूछ रहा कौन से प्लेनेट का एक भी उपग्रह नहीं है, ये वाला कौन बनेगा करोड़पति खेलना है अभी. एवरीवन, डू यू वांट टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति? हैव आई गिवन यू ऑलरेडी पीडीएफ हैंडआउट? टेबल बना के दिया है. ऑल द प्लैनेट्स का टेबल बना के दिया है.
तो अचानक कौन बनेगा करोड़पति आपके अंदर जो उबाल मार रहा है, रोक लीजिए, रोक लीजिए. रेडी है? यस. तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड द कमेंट्स नाउ. परफेक्ट. व्हाट इज जॉटिंग? आई वांट टू टेल यू, जो भी आप लिख रहे हैं, वट एवर यूर राइटिंग विद मी, दीज आर रफ नोट्स. यू हैव बीन गिवन आउट. आपको हैंडआउट्स मिल चुके हैं. आपको उससे क्या करना है, घर जाकर और क्लास के बाद, घर पे ही है वैसे तो आप, आई एम सॉरी व्हेन आई से घर जाकर बिकॉज आई एम यूज्ड टू ऑफलाइन क्लासेस. यू विल पिक अप फ्रॉम द बुक एंड कंप्लीट योर सेंटेंसेस. जॉटिंग्स क्या होते हैं? जॉटिंग्स क्या होते हैं मैं बताता हूं. से एन आईएएस ऑफिसर is there and telling his team about flood relief. Yes or no? He is telling and the team is writing some things. So the team is not writing all the sentences spoken by the IAS officer. Only the important points. So I am telling you something. You only write the important points. When the team goes back, it completes those sentences. Is everyone okay? चलिए. So with me on this. So let me start. Please keep writing. Apart from NCRT, can I read GC Leong? So everyone, please stop chat. Stop chat. चैटियाना बंद करिए. मुझे भी चैटियाने में बहुत मजा आता है, लेकिन अभी नहीं. We are working on that. So everyone, Earth is born. Whatever I am writing, keep writing on that. Earth is born. Not an easy birth. Not an easy birth. Yes or no? Lot of collisions, hitting, everything happening. The process is called planetary accretion. If you do not know about accretion, watch my class yesterday. Is everyone okay? So planetary accretion, what happened? Small things, they kept on getting stuck to each other, big ones. Is everyone okay? This is happening. I hope you are drawing also. Don't just listen to me. Now it is notes. Now it is notes. Yes? No more Chatiana. Only this. Only this. Now what happens is there are collisions. Collisions happening. Yes or no? Blasts happening. What happens because of this? This releases heat. Everyone okay? The difference between notes and jottings? Likh rahe. We will write in our own sentences after the class. That will also help us. That will also help us in understanding. And when we are writing after the class, that is revision. Where will you get that information? Two sources, fixed sources, class 11th NCRT and the handout provided by KGS. I have already sent that handout, so please use that. So heat is there. So can I say Earth was born as a molten fireball? The process is called planetary accretion. I am putting number 1. Will you remember this word? These are jottings. इन्हें notes नहीं कहते हैं. These are jottings. Everyone okay? Let me go to the next page. Let me go to the next page. So I am saying planetary accretion created this Earth. New born Earth. Is everyone with me? Newborn Earth. Hot, molten. Why? Because of the process of accretion. Everyone with me? Let us come here. Can I write cooling here? Can I write cooling here? Why Earth is cooling? Because planets do not have their source of heat.
planets do not have their source of heat, so Earth thing. Everyone with me? What will cool first? The periphery or the core? पहले क्या cool होगा? Sir, the periphery will cool. Inside still hot. Inside is still hot, but this has cooled. क्या होगा? This has cooled. Everyone with me? Think of a situation. Yes, you go back to home and tell your mother, I am hungry, make my favorite food halwa, suji halwa. Yes, kira payasam, South India. Yes, kheer बनाई जाएगी. Okay, so people who have had halwa, suji halwa, very hot when it is poured. So in your childhood you were very, very greedy. Moment halwa came, you put a spoon and then put that in your mouth and you learned the lesson of your life. Garam halwa मुंह में नहीं डालना चाहिए. You should not try to consume very hot halwa payasam because it's very hot. Did we learn our lesson or not? Now next what you happened is, then you decided to wait. And when you waited, what happened? You found a layer formed on top. Yes or no? The same thing is happening to the earth. That layer is forming. Inside it is still hot. And the layer has formed. And the layer is called primordial crust. Now Hindi people are very sad. Sir, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. Primordial crust, प्रारंभिक परपटी. If you are not able to understand this, you can write in English now. Don't worry. And if you feel, no sir, if I am not able to understand, sir, मुझे हिंदी में ही बताओ. I am going to take your Hindi class also. There also it will come. Revision हो जाएगा. Is everyone okay? ओके तो ये जो सारे के सारे वो हैं एवरीवन, ये सब क्या प्रोसेस हुआ है? कल प्रोसेस हमने देखा था. चीजें आती हैं, टकराती हैं, टूटती हैं. ये एक सेक्शन हुआ, ये एक सेक्शन हुआ, ये आएगा. बहुत सारी चीजें होती गई, टूटती रही. देयर इज ब्लास्ट हैपनिंग. एंड हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक? मिलियंस ऑफ इयर्स. यस और नो? मिलियंस ऑफ इयर्स. ये पॉसिबल भी है सर? एवरीवन टेल मी वन थिंग. Have you seen in the summer season when the fan is rotating in your house, under the bed there are balls of dust, धूल, बाल, छोटे छोटे कागज, किसी भी चीज का, रेत के कणों से छोटे छोटे गोले बन जाते हैं कि नहीं? यस और नो? यस. इसको यहां से फोटो बना के नहीं सोचना है कंकड़ चिपके थे. कल फोटो में देखिए, कल की क्लास अटेंड करिए. एक्रीशन इज अ प्रोसेस, बॉम्बिंग प्रोसेस. एक्रीशन का मतलब सिर्फ चिपकना नहीं है. ये सुनो, एवरीवन ओके विद दिस? तो अब क्या हो गया? प्राइमोर्डियल क्रस्ट. तो द इंग्लिश मीडियम पीपल, लेट मी ब्रेक दिस वर्ड. प्राइम मीन्स फर्स्ट, ऑर्डियल मीन्स फर्स्ट इन ऑर्डर. क्रम में पहला जो परपटी बनी उसको कहा गया प्राइमोर्डियल क्रस्ट. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? व्हाट इज इनसाइड दिस? स्टॉप चैटिंग. व्हाट इज इनसाइड दिस? क्या है इसके अंदर? व्हाट इज इनसाइड दिस? नंबर 1, ऑल एलिमेंट दैट अर्थ इज मेड अप ऑफ. ऑल एलिमेंट्स आर इनसाइड. सबका जमघट. इज एवरीवन? ठीक है, परफेक्ट. दिस इज ऑल मोल्टन, सब पिघला हुआ है. बाहर क्या हो गया? बाहर एक लेयर है. देयर इज अ लेयर इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल क्रस्ट. एवरीवन विद मी? ऑल एलिमेंट्स में आयरन इज देयर. इज आयरन एन एलिमेंट? यस सर, इट इज अ मेटल. इज इट हैवी? यस, इट इज हैवी. व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ आयरन? टेंडेंसी ऑफ आयरन is to go in the center. Why? Heavier things go towards the center. Remember yesterday we were taking an example of a glass. Yes or no? Lighter things like oxygen तो नहीं कहूंगा मैं, यहां पर हाइड्रोजन डालता हूं. Remember, most of the gas is hydrogen. हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या? बाहर आने की. Is everyone?
Everyone okay? Are we clear? So there are things which are lighter things, there are things which are heavier things, and they are stuck together. Imagine you are shifting a house. You are shifting a house and you have gone into a new house and you have put everything over there. आपने सारा सामान उठा के नए घर में रख दिया है, अभी अरेंज नहीं किया है. कैन आई से दिस इज नॉट अरेंज्ड? लाइटर थिंग्स आर देयर, हेवियर थिंग्स आर देयर, सबकी खिचड़ी बनी हुई. डू वी गेट दैट? यस और नो? एवरीवन टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग. बिफोर द क्लास, अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने कहा सर की क्लास विल गो फॉर 1.5 hours, 2 hours, let me have something. But nothing was cooked early in the morning. So what did you do? You ate the food that was at night. रात का खाना आपने क्लास से पहले खा लिया. But because of bacterial activity, that food was spoiled. Yes or no? Now as you are listening to me, the pet is going good, 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 good. How long can you stay in the class? If you are in the class, and if this was an offline class, how long can others stay in the class? कभी भी धमाका हो सकता है कि नहीं? Yes or no? What is the challenge? What is the challenge, everyone? Earth has lighter things inside. This hydrogen is there, carbon dioxide is there, helium is there. They all want to come out. Yes or no? तो वही होगा जो आपके पेट में हो रहा है. उसके बाद क्या होगा? सर मैं जा रहा हूं, रोको मत सर मैं जा रहा हूं. एंड द अर्थ ब्लास्टेड. अर्थ ब्लास्ट. यस नो? लाइटर थिंग्स tried to come out and heavier things tried to go into the center. What are heavier things? Nickel and iron. Metals are heavy. What are lighter things? Hydrogen, helium, methane, ammonia. ये सब बाहर आ गए. सिंपल. एवरीवन सिंपल. इस प्रोसेस का नाम क्या है? What is this process called? Can you write good, 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 good in the exam? No, you cannot write. You cannot write good, 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 good. क्या लिखेंगे? Density differentiation. All elements try to arrange themselves based on their density. अपने घनत्व के आधार पर सारे पदार्थ ने अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश की. इस प्रक्रिया को घनीभूतीकरण कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रक्रिया को घनीभूतीकरण हिंदी माध्यम के लिए. बट अगेन इनवाइटिंग, टेक द टर्म्स डेंसिटी डिफरेंस, अरेंजिंग थिंग्स एज पर डेंसिटी. इज एवरीवन ओके? किसी ने लिखा है एक्रीशन. बेटा यू हैव गिवन अ गुड ट्राई, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एक्रीशन, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी डिफरेंशिएशन. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? डेंसिटी डिफरेंशिएशन. कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? एक और स्लाइड बना रहा हूं. अर्ली अर्थ मोल्टन. अर्ली अर्थ मोल्टन प्रोसेस इज कॉल्ड planetary accretion. Sir, why are you writing again and again? When we repeat, remember, riyaz, practice goes in our mind. Second, cool. Which crust? PC, primordial crust, not प्रियंका चोपड़ा. अगर आपका मन भी कर रहा है तो भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो. प्रियंका चोपड़ा नहीं है, प्राइमोर्डियल क्रस्ट. अंदर क्या है? लिक्विड. Now what happens is density differentiation will happen and heavier thing will go in the center while the lighter thing will try to push करेंगे. And the most important thing, please pay attention to it, there is a lot of water trapped inside the earth. In fact, महासागरों में पानी कहाँ से आया? पृथ्वी के गर्भ से आया. So the oceans got their water from the earth's interior. There is a lot of water.
विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. डू यू नो स्टीम इंजन किससे चलता है? स्टीम से चलता है. स्टीम का एक बल होता है, उससे चलता है. तो ये क्या करेगा? इट विल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द न्यूली बॉर्न क्रस्ट. क्या ये थिक है? नो, दिस इज न्यू क्रस्ट. दिस इज थिन. दिस इज वीक. कमजोर भी है, थिन भी है, वीक भी है, अभी ताजा ताजा बना है. इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? यस और नो? ट्रू और नॉट? ट्रू और नॉट? So everybody, somebody is asking a question that why earth is cooling, sun is providing heat. क्या आप ये मान सकते हैं कि सन की हीट से अर्थ का तापमान बढ़ जाएगा? एवरीवन, योर बॉडी टेम्परेचर विच इज देयर, इज इट बिकॉज ऑफ द सन? इज इट बिकॉज ऑफ द सन? ऐसी मुन्ना बात न सोचें, थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी लगाएं बेटा. सूर्य से आपने भी देखी है समर्स. हैव यू सीन समर सीजन? क्या आपने देखा है कि सन की वजह से आप पिघल गए? सूर्य का तापमान, सन का सरफेस का तापमान इज 6000 डिग्री सेल्सियस. 6000 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस. क्या आपके पास कभी 6000 आया? आता तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाते बेटा. ये सुनो, बोला सर सन तो है, ये ठंडी काहे हो रही है? अरे सुनो, अभी तो हिंदुस्तान में ही रह रहे हो ना. यू आर इन इंडिया और नॉट? इंडिया हैड विंटर्स. अभी ठंड लगी थी कुछ दिन पहले, तब काहे नहीं सन की तरफ देख के उठा लिए? ऐसे थोड़ी कर रहे हैं. बोला सर सन है तो अर्थ काहे कूल कर रही? अरे भाई टेम्परेचर आप समझिए, यहां पे टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस, तो कूल तो करेगा चाचा. ऐसा नो, हाथ लगा के देख लो जमीन पे, 5000 तो नहीं है. सवाल पूछ रहा है, हम भी हिल जाए कि सर सूरज तो निकल रहा है, काहे ठंडा हो रहा है? इज डीप, इज अ लॉट ऑफ हीट. उतना नहीं कर सकते. इज एवरीवन ओके? नाउ इट इज कूलिंग. So then why sun is hot? Remember sun में तो temperature चल रहा है ना. Sun is having fusion, so that is that. Everyone, it's okay. I took that doubt. आपका doubt is absolutely normal, but my job to clarify. Please doubt अभी थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए. I have a request. तो अंदर steam है, push कर रहा है. Yes or no? Push करेगा, will break. 1 2 3 4 जल्दी से डायग्राम बना लो. पीपल हु आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम श्योर डायग्राम बना नहीं रहा है, वैसा देख रहा है. somebody even wrote a question, सर ये इलॉन मस्क जो है हमको मार्स कैसे लेके जाएगा? तो जो लोग ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे वाले, ऐसे ना, इफ यू आर वॉचिंग दिस क्लास लाइक दिस, प्लीज वॉच पठान लाइक. ठीक है, दीपिका पादुकोण को ऐसे देखो, बहुत सही है, हम लायक नहीं है, बहुत कुछ ही बहुत अच्छा है, दैट्स ओके, बट दिस इज अ क्लास, नो, डोंट सिट लाइक दिस. यस, पेन उठाओ, जल्दी से काम करो. इलॉन मस्क कैसे जाएगा स्पेस में, कैसे लेके जाएगा? तुम्हारे पास टिकट है? जल्दी से बना लिया. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, व्हेन यू ड्रॉ दैट इज लर्निंग. ये सुनो, वेरी गुड. तो यहां से क्या निकलेगा? ये मैं क्या बना रहा हूं? एवरीवन, क्या बनाया मैंने? वोल्केनोज. थोड़ा सा टाइम बताऊं. टाइम इज 4.6 बिलियन ईयर्स. टाइम इज 4.6 बिलियन ईयर्स. उसके बाद ये प्रोसेस चल रहा है. ऑलमोस्ट 800 मिलियन ईयर्स लगे इस प्रोसेस. ऑलमोस्ट 800 मिलियन ईयर्स टाइम वेंट इनटू दिस. छोटा काम नहीं था ये. दिस हैपेंड वेरी वेरी स्लोली. द होल ऑफ द प्लैनेट हैड वोल्केनोस. वोल्केनोस से क्या निकलता है? एवरीवन प्लीज राइट देम, यू विल रिमेंबर देम. सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी गैस है? मोस्ट कॉमन विच गैस? वाटर वेपर. गेट दैट? नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट मीथेन, ammonia. And what is happening?
heavier things are going inside. What is that process called as? Density differentiation. We have iron and nickel. Okay, I hope you're not watching the film. Important. Yes or no? Perfectly okay. Somebody said, sir, magma and lava came out. बिल्कुल सही कह रहे हैं. Magma and lava, I am talking about gases. Gases. Perfectly okay. The steam or due to gaseous, which form of hydrogen and helium and then water? There is free hydrogen also. Hydrogen भी है, helium भी है. Everything is coming. Everything is coming out. All the people who are saying pyroclastic material and magma, you are correct. But right now I'm asking about gases. It is the gases which were driving. It is the gases which were doing all that good. Yes or no? Everyone with me? Process number 1, accretion. Process number 2, density differentiation. इस process को very important process called as degassing. Everyone, do you understand the difference between now jottings and notes? You are understanding it. After the class, complete the names. Is everyone okay? Degassing. यहाँ तक clear? Is everyone clear with this? Now something very important is going to happen. Something very important is going to happen. Is the earth livable right now? Is the earth livable right now? क्या अर्थ पे रह सकते हैं? Is it fit for living? Is it fit for living? No, it is not fit for any life. Very hot, molten. Only thing is the surface got completed. Now the gases have started arranging, but it is not fit for living at all. I want to tell you a new thing is going. What is this? Water with time will cool and condense. Yes or not? जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के बाद संघनन होता है. संघनन से बादल बनते हैं, मेघों का निर्माण होता है. All the people. Medium. Water can be different forms. It can be liquid, gas and solid. What happened was when the water was very hot, it came out as gas. But now it is cooling. Now it is cooling. Why is the water cooling? Because आप कभी hill station पे गए? Have you ever gone to the hill station? Yes. When you go to a hill station, does the temperature go down? Does the temperature go down? With height, the temperature reduces and the water vapor cools and it turns into water drops and clouds are. And then after millions of years of volcano, what happened? Earth had millions of years of rainfall. पानी की बहुत बड़ी अहमियत है. Everyone, please get this very straight. Why we are trying to find out water in different planets, in different galaxies? Because पानी से सब चलता है. Get that? तो ये पूरी प्रोसेस में water is very important. So water vapor, steam came out. What did the steam do? It blasted the earth. पृथ्वी की जो परपटी थी, the primordial crust was blasted away. Volcano, everywhere volcano. Earth was a living hell. नर्क. That is what Vulcan जो होता है, volcano आता है Vulcan शब्द से. Vulcan is the god of hell. ठीक है. वहां से volcanoes के बाद क्या होता है? पूरी पृथ्वी, the whole atmosphere around the earth is now covered with water. Yes. True. Now tell me, will rainfall further help in cooling the earth? Will rainfall further help in cooling the earth? Yes or no? Will rainfall further help in cooling the earth? So earth is getting cooled and rain happened for millions of years. What happened? क्या हो रहा है sir? The whole earth got submerged in water. इतना बारिश हुआ कि पूरी पृथ्वी पर the whole earth surface got covered with water. Is everyone okay? The crust is still there. Everyone, is the crust still there? Oh yes, crust is there. Crust भी hard हो गई है, ये भी पक्की हो रही है.
The crust is becoming harder now because now it is cooling. Yes, the number of volcanoes is reducing. So why is the number of volcano reducing? Yes or no? Why is the number of volcano reducing? So you had good happening in your stomach. You went to the bathroom. Yes or no? People heard some volcano there. After first volcano, will the number reduce? So 800 million years तक अर्थ kept on निकलो अब थोड़ा कम हो गया भाई, वो ना कम क्यों हो गया? Somebody is saying why other planets did not undergo this process. Who said they did not? I am saying Mars had undergone it. Venus में चल रहा है ये पिक्चर, अभी बाकी है, ऐसे मत सोचो. Yes or no? Somebody is saying rainfall कैसे हुई, फिर से समझा दो. बेटा एक बात बताओ, everyone please get this. When a lot of steam is coming out, when a lot of water vapor is coming out, where was water vapor? Water vapor was already inside the earth. ये पृथ्वी के गर्भ में था, ठीक है. तो नाउ इट इज कमिंग आउट. तो जब वाष्प को ठंडा करते, व्हेन वी कूल वाटर वेपर, डज इट फॉर्म क्लाउड और नॉट? तो जब व्हेन आई एम टीचिंग यू एटमॉस्फेयर, आई विल टेल यू हाउ इवेपोरेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन कॉजेज क्लाउड. कुल 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा है ना? यस सुनो. तो ऐसा हो गया. इज एवरीवन ओके? तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे वाले अभी भी दीपिका पादुकोण वाले छोड़ दो. हेलो दीपिका पादुकोण क्वेश्चन छोड़ दी. Somebody is saying, sir, are the volcanoes still coming? Oh yes, still coming. Everyone listen to this question. The fact that volcanoes are coming even till today, can I say Earth's density differentiation has not completed till now? Earth's density differentiation has not completed till now. Yes or no? Is everyone with me on this? Are we clear? Process एक बार फिर से रन कर दूं. Can I run this process once again? Please focus. Please focus. Earth. Yes or no? Initially, molten earth, very high temperature. Why? Accretion, collision, colliding. Molten earth starts cooling. First crust, early crust, very weak. What happened to this? Lost. It was lost. Now what happens is, within that things start arranging. That process is called Ghanibhutikaran, density differentiation. Yes, but there are gases pressurizing on that early crust. The crust blasts. These gases come out. They start coming out. Which is the most abundant gas? Water vapor. Somebody wrote that sir, I have heard that water came from comets. मैंने सुना है धूमकेतु पानी लेकर आए पृथ्वी पर. ठीक है, तो आपने सुना है, अच्छी बात है. A part of the water on planet Earth came from comets, but most of the water that came from Earth came from within the Earth. And I want to tell you, even now density differentiation is happening, and even now there are layers of water trapped within our mantle. वही चला रहे हैं ये ज्वालामुखी. All the volcanoes which you are seeing, they are still coming. So that is what we are talking. ठीक है सर, रेन में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है? हर एक का रोल जरूरी है? हर एक का रोल जरूरी है क्या? True or not? Somebody is saying why water vapor did not go into space. Why water vapor did not go into space? Beta, Earth has gravity. Earth is holding its atmosphere. Do you get that? Earth is big now. Is everyone okay? The comet के पास पानी कहाँ से आया? Remember, universe has water. Tell me everyone tell me. When sun will become a red giant, will it eat Earth? Yes or no? When sun will become a red giant, will it eat the Earth? Yes or no? After that Earth is eaten, will the water on Earth become the raw material for next future stars and planets? Yes or no? So when sun and earth were created 4.6 billion years ago or 5 billion years ago, universe is 13.8. तो हमसे पहले सब कुछ बन चुका है.
everything has been created before us. So can I say some water was also created? Is everyone okay? Somebody saying the voice is breaking. Is the audio fine? Get that? तो कोई बात नहीं, यहां तक आपने डाउट पूछे, समझ में आ गया. इज द नोट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज द नोट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी, इज दिस नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर अर्थ? सभी लोग ध्यान देंगे. एवरीवन स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग. एवरीवन प्लीज स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग एंड लिसन टू दिस. Listen to this because something very important has happened. Please stop. Number 1, number 2, number 3. What are these? Number 1 is lithosphere. Number 2 is hydrosphere. Number 3 is atmosphere. Everyone, this is a very important time in this lecture because now for the first time geography is created, because geography is the study of surface of earth, the land, the water, the atmosphere. Fourth is there, biosphere, but I have not put it here because the planet does not have life. Is everyone okay? Is everyone okay? Somebody saying sir बस एक बार बता दीजिए सर वाटर वेपर कैसे आया, शॉर्ट में बता दीजिए. There is nothing short बेटा. How did iron come inside? How did uranium come inside? How did calcium come inside? How did aluminium come inside? कैसे आया बच्चों? तो हमसे पहले ही एलिमेंट्स बन चुके हैं ना. ऑल एलिमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड. सर ये एलिमेंट्स कैसे बने? ओहो, तुम तो फिर पीछे जा रहे हो. यहां तक क्लियर एवरीवन? मैं उसमें भी ले जाऊंगा, डोंट वरी. डाउट सेक्शन में, सैटरडे डाउट सेशन, आई विल टेल यू हाउ ऑल दीज एलिमेंट्स वर क्रिएटेड. ठीक है, अभी एंथ्रोपोस्फियर की बात नहीं करें. 3 स्फीयर बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस. लाइफ इज नॉट देयर, लाइफ इज स्टिल नॉट देयर. Life is still not there. Life will come after some time because right now conditions are very difficult. Somebody said, sir, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल बताओ. कार्बन डाइऑक्साइड का रोल बहुत खतरनाक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, both of them are greenhouse gases. This made our atmosphere very, very hot. So life could not come. Life could not come. This is what carbon dioxide was doing it. Yes. Do we get that? एक क्वेश्चन आया, सर इज मेकिंग नोट्स इंपॉर्टेंट और रीडिंग इंपॉर्टेंट और रिमेंबरिंग इंपॉर्टेंट? ये नशे का क्वेश्चन है. एवरीवन यू गिव एन एग्जाम्पल, यू गिव एन एग्जाम. आप सबने एग्जाम दिए. इफ आई आस्क यू what activity you have spent most of your life, your answer will be study. Do we have to read, do we have to write, and do we have to memorize? तो ये राजा बाबू मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, सर रीड करना है या राइट करना है या मेमोराइज करना है? बेटा कहो तो सोडा भी भिजवा दूं, साथ में ही पी लेना. नो करने बच्चे. बट एवरीवन, इज देयर अ सीक्वेंस और नॉट? फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, मेक सम जॉटिंग्स, देन व्हाट डू यू डू? देन यू गो एंड मेक योर सेंटेंसेस कंप्लीट. थर्ड यू मेमोराइज. ऐसा मतलब कुछ तो ऐसे हैं सर, आधा घंटा पहले पैदा हुआ सर, आई वॉज बॉर्न हाफ एन आवर अगो सर, आई एम जीरो सर, फ्रेश पिंक इन योर हैंड. सर बता दो क्या, स्कूल पास किए हो, कॉलेज पास किए हो, सब तरीके जानते हो, बताओ. पूछ रहा है सर इसको रीड करें, राइट करें या मेमोराइज करें, क्योंकि हम तो ऐसे देखे थे. छोड़ बेटा इसको कर ले. एवरीवन ऑनेस्टली टेल मी, पीपल हु वर ड्रॉइंग दिस मेमोराइज भी हो गया कि नहीं? पीपल हु वर ड्रॉइंग दिस मेमोराइज हो गया या नहीं? मेमोराइज भी हो. आवर माइंड इज वर्किंग. तो मैं इस सब कहानी में नहीं फंसने वाला. सर ये करेंगे वो करेंगे, सब ऐसा होगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. जो हो रहा है यही हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन. सिंपल स्टेप्स: accretion, density differentiation, degassing, and creation of geography. Is everyone okay? Lithosphere,
Atmosphere, hydrosphere. Some people say, sir, वो comment मत पढ़िए इन लोगों का, कोई दिक्कत नहीं. See, I will choose which comments to be there, but I know that people who are writing, I said, stop commenting, पहले write करना शुरू करें. उनका तो change भी हो गया होगा अब तक. लैंड बन गया, एटमोस्फियर बन गया, हाइड्रोस्फियर बन गया. क्या नहीं है हमारे पास? लाइफ नहीं है. वाई? बिकॉज द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. बिकॉज अभी एटमोस्फियर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. ये बड़ा खतरनाक है. दिस इज मेकिंग द एटमोस्फियर वेरी वेरी हॉट. अमोनिया तो आप सोच नहीं सकते अमोनिया क्या कर सकती है. अमोनिया यू डोंट नो. तो आई वॉज कैरिंग अ शिप फुल ऑफ अमोनिया. फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में यूज होता है अमोनिया गैस. में थोड़ा सा लीक हुआ. इट्स डेंजरस. तो आई पुट ऑल द मास्क ऑन माई फेस एंड आई वॉज देयर टू चेक द लीक. गलती से मैंने मास्क थोड़ा सा हिलाया होगा. प्रोबेबली आई मूव्ड इट एंड लिटिल बिट ऑफ अमोनिया वेंट इनटू माय मास्क. माय आईज स्टार्टेड बर्निंग. Water started flowing out of it. I said, abandon, emergency, abandon, move out of this, otherwise I will die. Few molecules of ammonia can do it to me. Think about life. Will life be possible? No. So where is this carbon dioxide and ammonia? Where is it gone? Well, it is gone because atmosphere also underwent differentiation. I will teach in atmosphere class. चलेगा? चेंज हुआ ना. अभी हम कौन सा वाला कर रहे? We are doing lithosphere. So everyone, what is formed? Can I say the crust is formed and Earth's interior is formed? With me everyone on this? Somebody is asking, are degassing and differentiation still continuing? Yes, yes, yes. Degassing happening even now. Degassing happening even now. There are volcanoes right now in Hawaii Island. Yes, degassing is happening. Sir, is density differentiation happening? Yes, that is also happening. So very good. I am saying experience, curiosity. जो बता रहा हूं सचमुच में हो रहा है. Yes or no? Is everyone okay? Everyone with me on this? ठीक है, आगे बढ़े. वापस आते अपनी स्लाइड्स पर. ये मजेदार स्लाइड्स हैं यार, इसमें सब माल दिया हुआ है. तो नेबुला, दिस थिंग, ये छोटे छोटे हैं बट दे आर गेटिंग कोलिजन्स आर हैपनिंग. ये सब टकरा रहे हैं. they are becoming bigger, and why they are spherical in shape? This is all molten but spherical. Why spherical in shape? Because liquid wants, a fluid will want that to happen. Yes or no? तो क्लास के पीपीटी एडवांस में अपलोड कर दिया करे. डिमांड तो आपने कर दिया, होटल तो है नहीं. मैं तो बना रहा था पीपीटी आपके लिए. मुझे रोज अच्छा लगता है कि कुछ बढ़िया बात किया जाए. ट्रू और नॉट? डिफरेंशिएशन समझ में आया एवरीवन? Everyone? Somebody has asked a question right now. Why the core of Earth is not cold? Why the core of the Earth is not getting cold? ये तो समझ में आ रहा है. I want to tell you, in the center of Earth, the temperature is around 1000 degrees Celsius. Why is not getting cold? Why is it not getting cold? Why is there heat inside? Why does the temperature increase inside the Earth? Everyone, why is there heat inside the Earth? Number one, the Earth was molten. Yes or no? Earth is cooling. Has the cooling been complete?
Has the cooling been complete? Is the cooling of earth complete? लास्ट से पहले you had food. The food was hot. लास्ट के बाद में खाना पूरा ठंडा हो जाएगा या नहीं? Maybe, maybe not. Yes or no? Can I write this thing residual heat? अभी भी पृथ्वी के पास ऊष्मा है. जो पहली हीट थी, रेजिडुअल हीट, वेयर? एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, वो है. इज एवरीवन ओके? तो अर्थ इज स्टिल हॉट. विल इट वन डे फाइनली कूल? विल कूल. इज द टेम्परेचर गोइंग डाउन? बट गोइंग डाउन स्लो. इज एवरीवन ओके? रेसिडुअल, किसी ने कहा अंग्रेजी में सर रेसिडुअल क्या है? बचा हुआ. भाई सर कहाँ का बचा? स्टार्टिंग में जो हीट थी बेटा, ये वाली हीट बची है ना. मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं. यहाँ पर ये जो थी ये कूल हो रहा है ना, अभी भी बचा हुआ है. वेयर डिड इट कूल फर्स्ट? आउटर. इनसाइड इज स्टिल हॉट. इज इट वेरी डिफिकल्ट? अब दिमाग नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ है भाई. If you are not going to understand such a simple thing, तब तो प्रॉब्लम है. Yes or no? So residual heat. Keep writing, keep writing. Second thing is a new heat source. So what is new heat source? Inside Earth. What is that, sir? Uranium. What is uranium? Uranium is an unstable molecule. तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है. इट ब्रेक्स. इट ब्रेक्स एंड दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. आपने सुना है यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव मटेरियल? यस. रेडियो एक्टिविटी गिव्स हीट. इनसाइड द अर्थ देयर इज सम ओल्ड हीट एंड सम न्यू हीट. दैट इज व्हाई अर्थ इज स्टिल हॉट. इज एवरीवन ओके? Everyone okay? Simple thing. Why earth is hot? So somebody says, so why is the core still hot? Because of this. Will it reduce? Yeah, with time it will reduce. ठंडा हो जाएगा. Everyone okay? Simple. Radioactive. So two cause. तो ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, तो यू शुड बी क्लियर. कोई तीसरा कारण नहीं है. जब पृथ्वी को क्रोध आ गया, पाप बढ़ गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई कारण नहीं. There is nothing like that. This is the simple thing. Yes or no? Is everyone okay? ये पता चल गया हमें. Now let us go back to this. I want to find what is inside the. I want to find what is inside the. How can I find that out? Sir, how did you get to know that Earth is so hot? There are some people who have found it out. I know it is hot from this, but how is it found? How did this differentiation happen? This whole process of differentiation happened. How did it happen? So please tell us, how can it happen? So हमें पता कैसे चला? So there are some sources. There are some sources from which we can find out what is inside the. Yes. So people tried to dig inside, mining, खनन किया. But the problem was, as people were going inside, the temperature started increasing at a rate of 1 degree Celsius per 32 meters. As we were going inside the earth, the temperature was increasing, so mining was not possible. Mining से आंसर नहीं मिल रहा था. Is everyone with me on this? Mining did not tell us much about it. Everyone okay with this? फिर हमने कहा चलो मैग्मा की स्टडी कर लेते. रिमेंबर वोल्केनोज में क्या निकलता है? Volcanoes pour out magma and lava. Yes or no? Molten rocks inside earth are called magma. Molten rocks inside earth. Why are they molten? Because of heat. When they come out, they are called lava. So if we study magma and lava from a volcano, it is coming from Earth's interior. Will that give me a understanding of what is inside the earth? It will. But will it tell me where the magma is coming from? वो भी प्रॉब्लम है. Yes or no? नहीं.
That was also not there. Another is meteors, जो बाहर से उल्का पिंड आते हैं. Yes, true or not? उल्का पिंड आते हैं. True. तो वो जो उल्का पिंड आते हैं, they were also created at the time when Earth was created. They can also be the source. But ये सारे sources, they do not tell us what is inside the Earth and where are they coming from. ठीक है, तो मैं वापस जाता हूं. Let me show you something interesting, everyone. So this is Earth. What is the radius of Earth? 6371 kilometer. Is everyone okay? Where are you? You are standing here. Everyone, are you are you this big or are you this dot? आप क्या हो? Are you a big man or a dot? You are a dot. Yes or no? अब कोई कह रहा है सर यहाँ पर पानी निकल रहा है तो ठंडा होता है सर, लेकिन कोर तो गर्म है. द कोर इज हॉट बट द वाटर कमिंग फ्रॉम द लैंड इज कोल्ड. ओ भाई, पानी तो ऊपर से ही निकल रहा है वो. यस और नो? क्वेश्चन, वी डोंट नो. वी सॉ अ वोल्केनो कमिंग. वोल्केनो में क्या निकला? मैग्मा. यस, मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम, बट मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम ए, बी, सी. वी डोंट नो. अर्थ के अंदर क्या है? वी डोंट नो. यस और नो? Very difficult to tell where it is. Yes. Then we are wondering, okay, काम करते हैं, let us drill a hole. एक होल कर लेते हैं. When we started going down in this, it became very hot. Problem हो रही है, we do not know what is inside the earth. What is inside the earth? So man is nothing. If this is 6371 kilometer, think about a 6-foot man. वो क्या होगा यार? कुछ भी नहीं होगा इसके सामने. True or not? Yes. So now we wanted to find out इसके अंदर क्या है. We really have no clue. We really have no clue. And people started working on that. एक नाम हमने सुना, एडवर्ड सुएस. He said, Earth is layered. Please keep writing. अर्थ के अंदर क्या है? लेयर्स है. अर्थ इज लेयर्ड. अर्थ इज लेयर्ड. Get that? And the layers are crust, mantle and core. बना दूं? Who's giving us this idea? Edward Suez is giving us this idea. Get that? This is crust. Get that? Then around 2885 kilometer, this is mantle. And this is core. Get that? 6371. Keep drawing this, everyone. As we go inside, what happens to the temperature? जल्दी से बताइए. The temperature increases. As we go inside, the temperature increases. He said, as we go inside, even the density increases because this is Sial, light or lightest. This is Sima, silica and magnesium, and this is core, nickel and iron. So density also increases. Now everyone, you have to write the answer in the chat box. I am waiting. I am waiting. You have to tell me the reason why A and B is correct. Why is the temperature increasing? What is the reason for that? A. And why is the density increasing? Reason for that. सर ऐसा कभी होगा कोर भी ठंडा हो जाएगा मिलियन ईयर्स के बाद? यस, इट विल हैपन. इट हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑन प्लैनेट मार्स. मार्स का कोर ठंडा हो चुका है. Everyone, I am looking for A and B.
आई वॉन्ट टू सी कितने लोगों का आंसर सही आया. I am looking at the answer. Tell me why A is there. Tell me why. Reason for A and reason for B. Very good. किसी ने कहा B is density differentiation. Very good बेटा, you are absolutely correct. B का reason है density differentiation has happened. Heavier things and gone inside. What about this? What about A? सर अभी जो है कूलिंग पूरी नहीं हुई है, इनकम्प्लीट कूलिंग. एंड व्हाट डू वी हैव? रेसिडुअल हीट. एवरीवन गॉट दिस? सी एवरीवन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कमेंट्स कमिंग फ्रॉम पीपल हु वांट टू गो फॉर अ जर्नी टू मार्स यूजिंग इलॉन मस्क. आई एम इंटरेस्टेड इन यू पीपल राइटिंग आंसर A and B. Most of you have got it correct. Earth has still got heat trapped inside it. Yes or no? Can I say everyone? Everyone tell me, if water vapor is still trapped somewhere here, everyone, so what will be the tendency of the water vapor to come up? आना चाहेगा कि नहीं? And because of that, volcanoes are still coming. So can I say density differentiation and degassing is still happening? The process is still happening. ये उसका सबूत है. Is everyone okay? Now comes the big question. Now comes the big question कि भाई ये पता कैसे चल रहा है? How do we know this? How do we know this? Where do we get this idea from that there are layers? Everyone, we did not get this idea from direct sources. We got idea from indirect sources, and those indirect sources are called seismic waves. What are these called as? Seismic waves. Seismic waves क्या होती? What are seismic waves? थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा बताऊं. seismic waves. अब हम अर्थ के अंदर जानना चाहते हैं. We want to find out what is inside the earth. Please listen to this. So I am giving the heading seismic. Seismic means shock. Earthquake waves. भूकंपीय कंपन. भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनसे जो कंपन होता है, सीज्मिक वेव्स. एवरीवन ओके? तो ये अर्थ की सरफेस. सडनली समथिंग हैपन्स देयर इनसाइड द अर्थ. रॉक्स आर मूविंग. यस, रॉक्स आर मूविंग एंड सडनली it generates a lot of energy and energy comes out in the form of vibration. Is everyone okay? तो हम कहां पर है? अर्थ के अंदर है. अर्थ के अंदर है. And suddenly the rocks have got displaced and some energy has got released. This energy will start traveling in all directions. Okay. Example, everyone pay attention. Example, take a stone in your hand, throw in the water. Did you disturb the water? And did the waves get created? क्या आप पत्थर मारते पानी में तो तरंगें चलने लगती हैं? उसी तरह से what is happening everyone? Some energy was released here. This place which is called the focus of the earthquake. Energy was released and that energy was transferred in the form of waves. These waves are called seismic waves. अर्थक्वेक की वेव्स को सीज्मिक वेव्स कहते हैं. इज एवरीवन ओके? द प्लेस वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड द फोकस. तो भूकंप का फोकस ये होता है और फोकस से जो तरंगे निकलती हैं, द वेव्स व्हिच आर देयर, दीज आर कॉल्ड सीज्मिक वेव्स. इज एवरीवन ओके? Now seismic waves, as they are traveling, everyone pay attention, as they are traveling inside the earth. These are called body waves. ये दो तरह की होती है, body waves. And when they hit the surface, यहां पर जो होगा, so they will disturb the surface also. These are called surface waves. So what did I say? Focus. What comes out from focus? Seismic waves. Seismic waves inside the earth are called body waves. Surface waves.
Have you ever felt a earthquake vibration? Everyone, have you ever felt the earthquake vibration? Yes. टर्की में जो अभी earthquake आया उसके वाइब्रेशन बहुत जगह पर फील किए गए. Where were they felt? Many places in the world. X, Y, Z, A, B, C. Yes or no? Many places it was felt. What was it? These waves were traveling over there. Is everyone okay? Somebody said, sir, नेपाल में जब earthquake आया था तब मुझे पता चला. ठीक है. So everyone, which wave did you feel? You did not feel the body wave. You felt the surface. Do you get that? Body wave stays inside the earth. When it comes on the surface, that is called surface wave. Surface wave is what we feel. Is everyone okay? Somebody is saying Himachal mein it is common. Perfectly okay. Is everyone okay? यहाँ तक clear? यहाँ तक clear? Now everyone, the waves were felt in say for example Iran. They were also felt. These waves were also felt in France. But the maximum damage happened in Turkey. Why? Because Turkey, that place was closest to the focus. So the place on the surface which is closest to the focus is called epicenter. Everyone okay? Focus versus epicenter. Focus उसका उद्गम स्थान है. It starts from here. Epicenter is the place on the surface. Point on surface closest to. Is everyone okay? Are you with me? सब लोग मेरे साथ हैं? Earthquake energy is released. Place is called focus. It will travel everywhere in the world, but the maximum impact, maximum force will hit where? The point closest on the surface, which is called epicenter. From epicenter, the waves will move everywhere. Surface waves are also there. Is everyone okay? Get that? We have a class on earthquakes. We will talk in detail about earthquakes there. This point is just to introduce you to what? Seismic wave. किसकी बात कर रहे हैं? Seismic wave. Is everyone with me on this? Everyone clear? So I'm not talking about earthquakes. Earthquakes some other chapter. किसी और चैप्टर में करेंगे. अभी seismic waves की बात कर रहे हैं. Seismic waves में भी I am interested in finding the interior of earth. So which wave will help me, everyone? I want to study the interior of earth. Which wave will help me? Which wave will help me? Notes लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखते रहो जो भी स्क्रीन पर आ रहा है. Which wave will help me? Body wave or surface wave? Body wave. Very good. बहुत सही. Body wave will help me. Body wave की अब हम बात कर रहे हैं. फिर से बना दिया. What is this place called? Epicenter. यहां से फोकस से earthquake आया. Which wave? Body wave. Is everyone okay? E पर I put a device. This device is called seismograph. What is it? It is a device. Please write down. अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक की तरंगों का अध्ययन करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द अर्थक्वेक, वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड सीस्मोग्राफ. इट मेजर्स द वाइब्रेशन. इज एवरीवन ओके? ठीक है. सीस्मोग्राफ क्या है? एक पेन लगा हुआ है, पेन ऑन द पेपर. व्हेन इट मूव्स
it paints a line like, जैसे आपने दिल की धड़कन वाला कार्डियोग्राम देखा, इस तरह से वो पेंट कर. Is everyone okay? So when there is no vibration, and when earthquake comes, this is there. Is everyone okay? So now, sir, is earthquake come from the core? Earthquake will not come from the core. Earthquake generally comes from the lithosphere and the outer mantle. We will understand that. तो कोर तक मामला नहीं जाएगा, बाहर से आप क्यों आता है वो भी समझे. एवरीवन ओके? समझ में आ गया? सीज्मोग्राफ. कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? जो भी साथ में लिखता जा रहा हूं, साथ साथ लिखते रहो. डिवाइस मेजरिंग पहले देखा. व्हाट इज सिज्मिक वेव, व्हाट इज बॉडी वेव, व्हाट इज सरफेस वेव. वी आर इंटरेस्टेड इन बॉडी वेव. व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड? डिवाइस इज कॉल्ड सीज्मोग्राफ. ठीक है. तो देयर इज दिस सीज्मोग्राफ. ये एक पेपर होता है, पेपर के रोल पर a pen is marked attached to that. There is a pen. This is the machine. ये पेंट करेगा. So normally what is it painting? Straight line. Normally it is painting straight line. But what happened was, moment earthquake came, the pen moved. Do we get that? So this is earthquake. But it was seen that whenever earthquake comes, there is one disturbance, and after that there is another disturbance. So earthquake, when it comes with two disturbances, not one but two. So now what is happening is, this is the focus and this is where it is going to hit. One first wave hits and then second wave hits. दो waves आती, एक नहीं आती, दो आती. The one which comes first is called P wave. The second one is called S wave. Slower, faster. Is everyone okay? सर अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो तो डिवाइस गिर जाएगा. बेटा अगर बिल्डिंग ही गिर गई तो डिवाइस कहाँ लेकर जाओगे? सुनो, इफ एन एयरक्राफ्ट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज अ ब्लैक बॉक्स. नो, तो अगर विध्वंस ही हो रहा है तो फिर कौन तो देने जा रहा है? यू गेट दैट? इज एवरीवन ओके? पी वेव इज प्राइमरी, एस वेव इज सेकेंडरी. पिछली 3 स्लाइड में हमने क्या बात की है? व्हाट हैव वी टॉक्ड अबाउट? दैट देयर आर वेव्स फ्रॉम अर्थक्वेक, दोज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स. Body wave, surface wave. Next slide. They are measured. We are interested in body waves. Body waves are measured by seismograph. Seismograph से क्या मिला? Two types of waves comes, P waves and S waves. Get that? They are going to hit. Is everyone okay? Can we feel a body wave? Yes, if you are on the surface. Suppose आप epicenter पे हो, body wave आके hit करेगी तो surface को हिलाएगी ना? Yes. But that's the place where surface wave will start. ठीक है, आप तो surface पे हो ना बच्चे, so when you will feel the wave, वो तो surface ही होगी. True or not? Everyone okay? तो अभी कुछ लिखा नहीं. Somebody saying sir इसको बड़ा लिखिए. P wave means primary waves and S wave means secondary wave. Is everyone okay? Earthquake की waves कैसे आती हैं? Primary और secondary waves आती हैं. With me on this, everyone? Seismic wave, seismology is the study of vibration. You can measure it from the seismograph. So when people ask me, sir, किससे अपडेट करना है? स्लाइड से अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे. Yes or no? So everyone, this is the focus. This is the focus from which the body waves are moving. The body waves are moving like this. Is everyone okay? And they will reach the surface. Can you see this? I've already explained this. अब picture में देखना. अब दो waves हैं, primary waves and secondary waves. So have you seen waves like this? S waves are like. What are primary waves? Sir ये तो move नहीं कर रहा है. ये कौन सी waves हैं? Primary waves are like this. Compression, rarefaction. Compression, rarefaction. ये ऐसे चलती. Yes, secondary waves move like this.
तो दो अलग अलग तरह की वेव्स हैं. प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. इज एवरीवन ओके? शुड वी यूज अनदर नोट, कॉपी और पेज? आपकी मर्जी. yes yes many waves can come. everyone I am back on this. क्या कर रहे थे हम? प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. याद रखना, प्रीलिम्स में आता है ये. longitudinal waves and secondary waves are what? Transverse waves. सर हमें पढ़ना है साइंस ऑफ वेव्स. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस. ये ऐसे चलती हैं और ये कैसे चलती हैं? Get that? तो ये कंप्रेशन, रेडिफैक्शन ऐसे चलती है. हैव यू सीन अ स्पीकर ऑफ टेंट हाउस में जो म्यूजिक चल रहा होता है, स्पीकर देखा? स्पीकर ऐसे मूव करता है आगे पीछे. साउंड वेव इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और जो लाइट वेव्स होती हैं दोज आर ट्रांसवर्स वेव. इज एवरीवन ओके? दे आर नॉट कॉल्ड, they are the two types. Is everyone okay? तो मैंने क्या सिखाया अभी? What did I teach you? We want to find out Earth's interior. We have found out that Earth has the three layers. Who told us? Suez told us. How did he get to know? Well, there was not a direct method. They used indirect methods. Indirect method is called seismic wave method. Seismic waves. What are seismic waves? These are earthquake waves. Is everyone with me till this point? Are we clear on this? Yes. So how seismic studies helped us? Everyone, I started the class 15 minutes late. थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए. Can I keep the class till 10:30? Yes or no? कुछ लोगों की शायद दूसरी क्लास है तो यू कैन गो, बट आई हैव वर्क ऑन दिस. थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा नहीं बीच में, थोड़ा सा टॉपिक रह. एवरीवन, पी वेव, प्लीज राइट डाउन. एवरीवन, पी वेव, एस वेव. प्रॉपर्टीज, फास्टर, दैट सेकेंड, can travel in solid and liquid. S wave, slower, can travel only in solid. दो प्रॉपर्टी लिखिए. Is everyone okay with me on this? Two properties of P and S wave. Two properties of P and S wave. Have we written this? P wave is faster, S wave is slower. ये properties है. You don't have to go into the science of it. Is everyone okay? Just last thing, just give me 5 minutes. काम बन जाएगा. Everyone, please draw. Circle. Please write F over here. What is F? Focus. S. Can I say this is 90 degrees from F? This is 180 degrees and this is 270 degrees. 0 degrees. जल्दी से लिख लेंगे. जो भी लोग दूसरी क्लास में जाने वाले, 5 minutes. प्लीज गिव मी 5 minutes. एटमोस्फियर का परसेंटेज चेंज हुआ है. वी विल टॉक इन द क्लास ऑफ एटमोस्फियर. प्लीज डू नॉट टॉक, नो मैसेजिंग. प्लीज डू दिस. एवरीवन, कैन यू सी द फोकस इज देयर? यस. फोकस मीन्स यहां से क्या हुआ? अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ. अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ. एवरीवन प्लीज कंप्लीट द ड्रॉइंग. 1, 2, S1, S2,
S3, S4, 1 2 3 4, S5 and S. Everyone, what are S? S are seismograph. तो कह रहे सर इसको 270 क्यों लिखा है यार, कौन है आप, डी रखेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना एंगल, ये अगर 360 डिग्री एंगल है तो यार क्या बात कर रहे हो बताओ। Is everyone okay? Somebody is asking why S cannot travel in liquid. बेटा ये उनकी प्रॉपर्टी है, वेव्स की प्रॉपर्टी है. दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्लास, दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्लास. इसलिए आपके लिए इजी करने के लिए क्या बोला, P wave comes first, arrives first, it is faster. P wave can travel through solid and liquid. S wave is slower. अब दिमाग लगाना है सभी लोगों ने. Everyone, quickly. S1, S2, S3, S4, S5, S6. What are these? Seismic station. Where do you think will the waves reach first? From this diagram, where do you think will the reach first? Quickly. Sir, first आएगा S1 पे. Why? Because it is closest. Where will it reach the last? I think T4 is the longest. T4 is the longest. Is everyone okay? Perfect. Smart people. पहले सर वहां पहुंचेगा, कम डिस्टेंस है, एंड दिस इज लॉन्गर डिस्टेंस, सो इट टेक्स टाइम. बाकी सब पे अपने अपने टाइम पे पहुंचेगा. T3, T2, T6. Is everyone okay? Where will be the maximum vibration? Where will be the maximum vibration? S1. S1 will have the maximum impact. That's also okay. Now everyone, please look at this. Please look at this. When they asked, did you receive the waves? S1 said, yes, I received P first and S later. S2 also said, I received P and S. S3 said, I got only P. नहीं, S3 said, I did not get anything. ये तो बहुत सही गया. S3, when they were asked, they said nothing, no waves. Yes. And S5, when they were asked, they were told no waves. They got P and. Do you get that? Everyone, please listen to this. Some people are saying there is solid inside, there is liquid inside. I don't know. Scientists don't know. We do not know internal structure. अभी नहीं पता है. I am तो just telling you how did the scientist work. तो scientist ने ये observe किया. Is everyone okay? Is everyone okay? Somebody is asking P wave travel through the gases. बेटा नशे में मत रहो. What are we talking about? We are talking about Earth's interior. Earth's interior में सारा rock है, तो solid चल रहा है अभी. Yes or no? Is everyone okay? S3, S5 में S3 and S5 did not get anything. S4 got P wave. Is everyone okay? Now scientists are going to use these properties. 1, 2, third properties, wave bend. When medium changes, medium or density, okay, this also bends when density changes.
Scientists know these property of the waves. Scientists know these properties of the waves. Yes or no? And scientists have this observation. They are going to apply both the things. Is everyone okay? ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है एवरीवन? P wave और S wave दो तरह की वेव होती है. There are two types of waves. P wave is faster, S wave is slower. P can travel through solid and liquid. S can travel only through solid. P wave bends when medium and density changes. S wave also bend. Is this difficult? If somebody is finding it difficult, so which college, which school, which level are you? अगर आप 6th क्लास में तो मुश्किल है. ये लिख दिया ऐसे. पहला ये कहां से आया? Science tells us this about waves. Second thing is there are observations. This we have got from observation. Now scientists are looking at it, and when they said that we do not find S wave, they found that from this point to this point no S wave travels. Scientists ने कहां से पता किया? Everyone, where did they find out? From their study that S wave does not reach here. S wave does not reach here. सौम्या, अगर आपको पता है तो फिर आप अपनी तरह से कर लीजिए. यस, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं. वेव्स हैं, साइंटिस्ट आर देयर, एंड साइंटिस्ट फाउंड दैट एस वेव्स आर नॉट रीचिंग हियर. They have to work because they did not have a teacher who was explaining everything. They were doing it for the first time. Scientists realized that if we join this line from the focus to this point, yes, S waves do not come, so there must be something liquid here. This told them this was the evidence that there must be something liquid over. And this is led us to say that the core is liquid. Story is, I am to just simply telling you what scientists did. मैं तो सिर्फ साइंटिस्ट के साथ चल रहा हूं. I am saying scientists know S waves do not travel in the liquid, and they were not traveling anywhere after this point. So first they connected this line and they made us. Is everyone okay? मैं ड्राइंग भी दिखा दूंगा, डोंट वरी. पहला ये तो समझे. हाँ, इसी को शैडो जोन भी कहते हैं. तो देयर आर पीपल जिन्हें चीजें रटी हुई हैं, रटना चाहते हैं, but they are not bothered about how did this happen. So my way of teaching is, let us look at what made the scientists come to this, that 105 degrees on either side, 105 degrees on either side of the region, the S waves do not travel. So that means there must be a liquid coming in. Why? Because they do not travel through. ये मुझे कहाँ लेकर जाता है? Where does it take? जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. It takes me this type. ये NCERT में दिया हुआ है. Many people do not understand this type. Many people do not understand this diagram. So with folded hands, I thought of telling my students first what is seismic wave, what is P wave, what is S wave, what are their properties. And S wave cannot enter. This is the seismograph, P and S wave. मैंने ऐसे बता दिया. कोई कह रहा है जी कॉम्प्लिकेट लग रहा है. Perfectly okay. Whichever way you are looking at, I thought of going to the root of it and looking at why these red lines stopped over here. These red lines are S waves, everyone. Can you see? S waves stopped at this. This tells us there must be a liquid somewhere. ये guess किया है. आज यहाँ पर बैठकर, today in 2023 we can be arrogant, we know everything. Somebody wants to go to Mars. Yes or no?
But I am saying when these scientists were doing it, how did this happen? ये अभी किसी ने कहा सर ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा. We will have to do that. और ये NCERT में भी दिया हुआ है. Is everyone okay? So this is in NCERT also. तो NCERT में भी difficult है, people don't understand it. So as a teacher, should I explain it or not? Should I explain this diagram? So that is what I am. Is everyone okay? So why don't P wave reach S5? P wave वो सारी चीज कल करा देंगे. Is everyone okay? Many people wanted to leave. मुझे पता है कि 10:30 पे आपकी दूसरी क्लास है, सब कुछ है. So that is why I just wanted to introduce this today, so that you can think over it. कल कराऊंगा इसको, कल फिर से कराने वाला हूँ, and कल इसको सॉल्व कर देंगे. Because when we read from NCERT, we don't understand much. We skip. मैं नहीं चाहता that we skip. तो अभी हमें पता चलेगा. First, there must be a liquid. Then, why inner core is solid? We will find out that also. What happens here? What is P wave shadow zone? What is S wave shadow zone? All those things will come in tomorrow's class. Is everyone okay? क्लास के शुरुआत में क्या बोला? एक चीज. Do you have that spirit of adventure? Do you have the spirit of curiosity? मार्क्स मेरे बहुत आए, मेरे बहुत मार्क्स आए 12वीं में भी, कॉलेज में भी. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ा क्योंकि मार्क्स मेरे बहुत अच्छे थे. बट आस्क मी हाउ मच आई. माई फादर आस्क्ड मी, बेटा व्हाई डोंट यू डू फिजिक्स ऑनर्स? आई सेड, पापा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स. ही सेड, यू हैव स्कोर्ड 96% इन फिजिक्स. मार्क्स तो मैं किसी में भी ला सकता. Yes or no? If you are that marks person and I am trying to explain you things, तो मुझे बस notes लिखवा दो, I can understand. But did you understand that from the behavior of these waves, P and S waves, scientists are indirectly able to find out what would be there, and they are guessing it. So tomorrow's class, we will continue this guess. We will understand why it is solid in the center, liquid core, and this. And I also told you, many people are asking that is the core still cooling? Yes, it is cooling. Will it become completely solid? Yes, it will become completely solid. And I also want to tell you, because of this nature of our core, that some part is solid and some part is liquid, we have magnetism. So when I teach you magnetism, then also I will be needing this. I be clear कि मुझे concept बताना है. Yes or no? मैं बताऊँ. If you are a person जिसको KBC पढ़ने की आदत है, just question answer, very good. They are very good for clearing some level exam which we have cleared. बहुत अच्छी बात है, because that exam is more on factual. That's the design of the exam. UPSC exam is about analysis, understanding. We will be looking at geomagnetism and all those things. So थोड़ा सा, can I ask the class to raise that bar? Yes or no? That's my request. और ये सारी आज मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो पूरा तो नहीं बनाया ना, पूरा नहीं बनाया. Why did I start doing half of it? I did half of it so that my class looks at it. They are still fighting with it after the class. यार कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आया. That's a very good state to be. I think that's the learner stage. Yes or no? When I was thinking, should I jump into this specific question right now or not? I was not very clear. I was afraid also. Yes or no? I wanted to inform people that take care, कुछ होता है. I wanted to keep some safety also. You are also in the same state. तो थोड़ा समझ आया, P wave, S wave, ये seismograph भी आया. But sir, I am not very clear. आ जाएगा. That's a very good state if you are a student. But if you were like this, कपादुकोन अच्छी लग रही है, ये वाला रंग था उधर, बेशरम रंग. Yes, so that's a different story. So how's the Josh? And can we end the class with this answer incomplete? Can you read from class 11th NCERT? Now we are in chapter 2 of class 11th NCERT, Principles of Physical Geography, where it is about Earth's interior. ये diagram पढ़ के आएंगे. Bring your doubts. I will see you tomorrow. Thanks a lot.